क्वेश्चनायर थ्रू एन्यूमरेटर्स, ये हमारा नेक्स्ट मेथड है. अंडर दिस मेथड अ स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनायर इज पुट अंडर द charge of the enumerators. Those who go out to the field to actual data are collected are called the enumerators. The enumerators contact the respondents, get replies to the questions contained in questionnaire and fill in their own handwriting. जो एन्यूमरेटर्स जो होते हैं वो रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट करते हैं, फिर उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं और क्वेश्चन पूछने के बाद उसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हैं. This method is most suitable when adequate funds are and trained enumerators are available. High degree of accuracy is needed. Informants are illiterates. अब आप सोचेंगे कि इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, कौन होता है, एन्यूमरेटर कौन होता है, रिस्पोंडेंट कौन होता है. तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वेस्टिगेटर वो होता है द पर्सन हु प्लान्स एंड कंडक्ट्स द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड द इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन होता है जो कि प्लान को और जो हमारे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करता है उसे हम इन्वेस्टिगेटर कहते हैं. एन्यूमरेटर इज अ पर्सन हु गोज आउट टू द फील्ड, जो कि फील्ड में जाता है एंड कलेक्ट डिजायर्ड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता है. ही इज़ द पर्सन हु एक्चुअली कलेक्ट द डेटा. ये वो पर्सन होता है जो कि एक्चुअली में डेटा को कलेक्ट करता है. रिस्पोंडेंट इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स द एक्चुअल डेटा. रिस्पोंडेंट वो पर्सन होता है जो कि एक्चुअल डेटा को प्रोवाइड करता है. ही रिस्पॉन्ड्स बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन द क्वेश्चनायर. कि ये क्या करता है, क्वेश्चनायर में जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अब हम इसके मेरिट्स देखते हैं कि क्वेश्चन थ्रू एन्यूमरेटर्स मेथड के क्या मेरिट्स होते हैं. तो पहली मेरिट्स ये है वाइड कवरेज. दिस मेथड इज सुटेबल इवन व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज क्वाइट लार्ज. सेकंड इज हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी. द एन्यूमरेटर्स हैव अ पर्सनल कॉन्टैक्ट with the respondents. It is possible to get accurate and reliable information. Moreover, information is collected by trained and experienced enumerators. Third one is better response. The presence of enumerator may induce the respondents in giving the information. Respondents can be persuaded to give answers to the questionnaire, so chances of non-response, like in case of mailed questionnaire method, is less. Impartiality. There is very limited possibility for partiality or biased information. Useful in case of illiterate responses. Unlike the mailed questionnaire method, this method can be used even if the respondents are illiterates. तो ये इसकी डिमेरिट्स थी. तो इसकी कुछ डिमेरिट्स भी होती हैं. फर्स्ट इज कॉस्टली. दिस मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव as expenditure on training, remuneration and conveyance are to be borne by the investigator. Time consuming. Enumerators may need specialized training for particular investigation. The process of investigation thus become time consuming. Inability of enumerator. If the investigator are negligent or not properly trained, अगर प्रॉपरली ट्रेन नहीं करते हैं एन्यूमरेटर्स को, द रिजल्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस आर लाइकली टू बी मिसलीडिंग. तो जो इसका रिजल्ट होगा आएगा वो ठीक नहीं आएगा. तो ये इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स थी क्वेश्चनायर थ्रू एन्यूमरेटर्स की. तो हमने प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के 5 मेथड्स पढ़े. इसमें हमने डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, information through correspondent, information through mail questionnaire, information through enumerators. ये हमने 5 मेथड पढ़े प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के. और इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ी कि क्या मेरिट्स होती हैं, क्या डीमेरिट्स होती हैं. इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया. कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा.
Most of the investigator makes use of secondary data in their respective studies. The main sources of the secondary data can broadly be classified into two parts. First, published sources, and second, unpublished sources. First is published sources. The various sources of published are given below. Government publications. Government publications are the major sources of secondary data. Semi-government publications. Semi-government organizations like municipalities, district boards, and others also publish reports relating birth, death, education, sanitation. These give factual information. Reports of committees and commissions. Government appoint committees and commissions on matter of great significance. They are required to inquire into specific issues and submit the report with the stipulated time. These reports become the sources of secondary data. For example, Narsimhan Committee report, Finance Commission report, Pay Commission report, Public Commission of the research institutes are sources of secondary data. Publications. Many research institutes are engaged in academic research work and provide important source of secondary data. Some are Indian Council of Agriculture Research, NCERT, ISI means Indian Statistical Institute. Fifth is international publications are the sources of publications, published sources of secondary data. Private publications भी होते हैं. For example, publication of trade association, newspaper and magazines, publications of research scholars. Next is unpublished sources. All statistical data are not published always. There are various sources of unpublished data such as records maintained by various government and private office, studies undertaken by various research institutions and research scholars, etc. These unpublished data are meant for use of members only. The investigator must ensure that the data are suitable for the purpose of inquiry. He must see the purpose of which the data was originally collected and its suitability for the purpose of investigation now in view. The investigator should also see whether the data are adequate for the investigation. Adequacy of the data is to be judged in the context of requirements of the survey by the available data. This can be judged from the three considerations. First is requirement of present investigation, geographical area covered by the secondary data, and time period for which secondary data are available. The investigator should also take into account the method which was used in collection of data. Sampling method may be biased depending upon the method, mode of selection of sample. The method adopted must be according to the nature of investigation. These are the sources of secondary data.